So if anybody can just raise their hand and let me know if they can see my screen and if they can hear me properly. All right, thank you very much. For now, I have muted everybody, and inshallah, after the presentation, I will allow you guys to unmute yourself and ask any questions as well. Right, so let me start. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, everyone. So nice to see all of you online today. Thank you very much, first of all, for taking out time and being part of this business presentation. We have people joining from different countries, so I understand that it's a global business, it's a global opportunity, and everybody has joined from different time zones. So it's very kind of you to take out time and be part of the presentation today. I'm very excited to be sharing this opportunity with you, which I was shown 6.5 years ago. And maybe jitni aaj excited hu to share this opportunity, I got very as excited when I saw this presentation, and I'm sure and I hope that you will like it as well. But before I jump into the presentation, I want to introduce myself because we have lots of people today. I don't know if everybody knows me. My name is Bushra Numan. I'm from Pakistan and currently I live in Canada. My educational background is in IT. मैंने कराची से ही पूरी अपनी education की है, and I did software engineering from FAST University Karachi. I was one of the top achievers, alhamdulillah, in my university. After that, I did 9 years of IT consultancy, and then and I really enjoyed my job because it was my field job, and I really loved coding and quality assurance and IT related stuff. So then I got married, of course, right after my graduation and 1 year of working. I got married and we moved to Bahrain, and I was the company that I was working with, उन्होंने मुझे फिर off site hire कर लिया. I continued with the same company, but I started working from home. So the company was basically a client of the software house that I worked in, and they were in New Mexico. So I started working from home with them from the Middle East while they were in New Mexico, which meant there was a complete time difference between the two countries. और चूंकि वो 9 to 5 kind of job थी, तो उसमें मैं रात को काम करती थी और दिन में I had to switch my hats to being a housewife and a homemaker and a mother, and just switching hats between that. And of course, with the passage of time, शुरू में तो बहुत सही हुआ, I was able to manage it really nicely. But as time goes by, बच्चे हुए और responsibilities बढ़ी, obviously it started becoming very challenging for me. I used to be a very cranky mom throughout the day, not being able to give enough time to my children. तो मुझे obviously बहुत ज़्यादा challenging लगता था और मैं बहुत sleepy रहती थी throughout the day. So that time, after 9 years of being in that IT job, I decided that, I have to look for something else. I just could not find myself resigning from the job. अगर मैं वो छोड़ देती, तो, I just did not find it in myself to do it because मैं हमेशा से काम किया है मैंने, and I want to be productive while being a good mother and a wife as well, and a daughter as well. So I'm a career oriented person by nature. So I did not want to resign from my IT job before I had something else in my hand. Luckily, alhamdulillah, उसी वक्त ये opportunity के बारे में मेरी एक friend ने मुझे बताया. She was in UK, and I saw the same presentation that you are watching today. इतनी मैं excited हो गई इसको देख के. I did not spend much time in making my decision. I watched this twice. एक दफा ऐसे live presentation देखी, उसके बाद इसकी recording दोबारा देखी along with my husband. And we both liked it a lot. He was the one who actually pushed me towards it more. He said, if anybody can do it, then you can do it as well. And, you must. So I started Forever Living in December 2015, which is around 6.5 years ago. And I did not resign from my IT job at that time, क्योंकि जाहिर है बाकियों की तरह मुझे भी doubt था कि पता नहीं ये काम करता है नहीं करता. I took all the trainings and I did all the activities. जो कुछ भी required था, मैंने शुरू में बहुत मेहनत की, क्योंकि हर काम में मेहनत है, right? And I really enjoyed doing what I was doing. Within 5 months, alhamdulillah, I became a manager on the marketing plan, which is one of the top positions of the company. And at that time, मुझे याद है उस महीने मेरा जो bonus आया था, that was almost as much as my 9-year-old IT job.
तो उस वक्त मुझे समझ आया इस बिजनेस का पोटेंशियल कि जब 5 महीने में मैं उस लेवल पर पहुंच सकती हूँ मेहनत के साथ, जो मैंने 9 साल की जॉब से अचीव किया है, देन दिस बिजनेस हैज पोटेंशियल. दैट इज व्हेन आई रिजाइन फ्रॉम माय आईटी जॉब एंड आई टुक अप फॉरएवर एज फुल टाइम बिजनेस. रेस्ट इज हिस्ट्री. 6.5 साल हो गए हैं. आई हैव बीन इन द बिजनेस एंड अल्हम्दुलिल्लाह under the umbrella of Forever Living, I have a very big team of over 2,500 people from all over the world. We are called the Soaring Eagles. And inshallah, if you decide to join, you will be part of the Soaring Eagles as well. We have lots of leaders amongst ourselves who are working really well, many who have reached way, above positions than mine, which is the beauty of the business, जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसकी marketing plan, इसकी hierarchy किस तरह की है. ठीक है. अभी मैं आई थिंक आई एम गेटिंग सम मैसेजेस. आई वोंट बी एबल टू टेक एनी क्वेश्चंस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. अगर कोई क्वेश्चन है या कोई भी इशू है टेक्निकल, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे बताने की कोशिश करें, या फिर इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर द प्रेजेंटेशन. So enough about myself. I think I'll now quickly get on to the presentation कि business है क्या, और हम कैसे काम करते हैं, कैसे earn करते हैं, और आप इसका हिस्सा किस तरह से बन सकते हैं इंशाल्लाह. So your reason, right? Your reason of joining this business presentation has to be there. There has to be a reason that drives every person. जब मैंने ये presentation देखी थी, तो मैं एक opportunity को search कर रही थी, something that I could do easily, flexibly from home. और मेरा reason for joining Forever था flexibility and work-life balance. I'm sure each and every one of you who's part of the presentation today has a reason why they want to look for an opportunity and why they want to start working from home. Most of us have financial liabilities, और हमारा बहुत बड़ा reason होता है पैसे कमाने का या extra income generate करने का, to get financial freedom. And that is true for everybody. Everybody wants to earn in an ethical and a halal way, and everybody wants to earn good money. Why not? It's absolutely fine in every religion to earn money and to have a good lifestyle. So with Forever Living, definitely you are going to get financial freedom. If you want to buy a house for yourself, you want to buy a car for yourself, a secondary car, if you want to take your kids out for a vacation, if you want to take them for extracurricular activities, जो भी extra चीजें हैं जिसके लिए अभी हमारे लिए पैसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, with extra streams of income we are able to do that. That is called financial freedom, that you have choices. You don't have to think so much before spending that money where you want to. किसी को आपने गिफ्ट करना है, कुछ भी अपनी मर्जी से करना है, अपनी फैमिली को ट्रैवल पे ले जाना है, या अपनी फैमिली कार खरीदनी है, या अपना घर बनाना है, right? With Forever Living, if you work hard, you will definitely get financial freedom, and that also as soon as you want it to be. Professional development, I would say, is something priceless that you will get from this opportunity. बहुत सारे लोगों से जिनसे मैं बात कर रही थी about Forever Living, they said that they are very shy, they are they are not people's person, they are not very social, and they won't be able to be on social media or do this or do that or marketing. मैं आपको बताऊं, I was exactly the same. I was a very shy person, always sitting in front of my computer, just doing coding and not really talking to anybody, क्योंकि मेरा काम ही IT का था, किसी से कोई interaction नहीं होती थी. I was a very anti-social and very shy person by nature. But when I joined Forever Living, I think in the past 6.5 years, I've seen myself grow professionally and personally a lot. And that is something that is priceless for me. जो professional और जो personal development हमारी team की होती है जब वो join करते हैं इस business को, because they get to work with a lot of people from different cultures, backgrounds, and although we all work from home, we don't really meet face to face, but still we get to learn a lot, which not only helps us in the business, but helps us elsewhere as well. So professional and personal development is something that you will definitely get with Forever. बहुत सारी ladies होती हैं जो they get depressed कि हमने इतना पढ़ा है लेकिन हमारी सारी abilities rust हो रही हैं, सिर्फ बच्चे पाल रहे हैं. मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई, I mean, being a mom and a full-time mother and a housewife is the most difficult job that one can ever have. But हमारी जो पढ़ाई वगैरह होती है उसको भी दिल चाहता है सबको कि वो use करें productively, right, and become self-independent as well. Flexibility
Flexibility is something that you are definitely going to get with forever. 9 to 5 jobs जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि जब वो शाम में थक के घर आते हैं तो उनके पास कितनी कोई एनर्जी होती है या कितनी ड्राइव होती है टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रन. बेयर मिनिमम चीजें करते हैं और उसके बाद दे आल्सो रिटायर फॉर द डे. But with a business like Forever Living, you will have that flexibility that I was looking for, the work life balance. कि मैं अपनी मर्जी से अपने वक्त में काम करूं और जब मुझे बच्चों को टाइम देना हो, फैमिली को टाइम देना हो, तो मैं उनके लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ, रेडी हूँ. Right, Abhibi, the presentation that I'm giving you, 2 of my children are at home. One of them wasn't really feeling well, so she's at home and I've made her busy somewhere and I'm doing this work. अगर मैं 9 to 5 जॉब कर रही होती तो मैं इस वक्त उसको घर नहीं रख सकती थी. तबीयत खराब में किसके पास उसको देती, राइट? और फिर जब मैं 5, 5:30, 6 बजे घर आती तो मेरे पास कितनी कोई एनर्जी होती कि I would have cooked nice food for her or soup for her or stuff like that for and be ready to receive my other children as well. Now with Forever and with working from home, I can do that, right? Be available and get done with my work before they come home. Build a legacy business. With Forever, you can build a legacy business. Legacy business वो होता है that you can pass on to your future generations, right? अगर आप कोई 9 to 5 जॉब करते हैं, किसी कंपनी में हैं और उस कंपनी में आप बेशक सीईओ की सीट पे पहुंच जाएं, but when you are no longer there, or let's suppose you retire, आपके बच्चे आके आपकी सीट पे नहीं बैठ सकते as a CEO, right? If they want to join the same company, they have to start from scratch. But with Forever Living, you can pass on your business to your children and they can inherit it from the point where you left. If you are a diamond manager in the business, they will take up from being a diamond manager and they will just continue with your business. So if you're no longer there or you are retiring or you're passing on your business to them, they will just take it as it is and they can continue growing it. So that is something that really stuck hard with me. It really clicked to me that जो भी मैं मेहनत आज कर रही हूँ, जो भी मैं हार्ड वर्क आज put in कर रही हूँ अपने बिजनेस में, कल को वो मेरे बच्चों के काम आएगा इंशाल्लाह, वो बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा. राइट, सो सब अब थोड़ा सा बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे. राइट, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी होते हैं और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग. जो हमारा मार्केटिंग प्लान है या द कंपनी दैट वी आर अ पार्ट ऑफ, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज इंडीड द बिजनेस मॉडल ऑफ द 21st सेंचुरी. राइट, अगर आप गूगल करें, आप यूट्यूब पे देखें, कहीं भी अपनी थोड़ी सी होमवर्क और रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इफ यू वांट टू earn good money in the next 10 years, then you have to become part of network marketing. राइट, ये जो रॉबर्ट कियोसाकी एक हैं जिन्होंने बिजनेस ओनर, उन्होंने एक मॉडल बनाया था ESBI मॉडल. अगर किसी को वो पता है तो आई वोंट गो इनटू दोस काइंड ऑफ डिटेल्स, लेकिन उसमें भी वो यही बताते हैं कि 90% of the money in the entire world is with people who are in business and who are investors. और 10% of the money जो पूरी दुनिया की है वो उन लोगों में है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर वो जॉब करते हैं. ठीक है, ये भी किसी वक्त इंशाल्लाह in our next session I will explain the difference between all of that. But when you study that model, you will understand that if you want to make good money, if you want to be part of that 90% money that is being distributed in the whole wide world, you have to be either an investor. Investor वो होता है जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा हो, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करे और पैसे से पैसा बनाए. Obviously हमारे पास अगर नहीं है वो, तो we can't be an investor. But business owners are those who can do their own business by becoming part of something that is already existent. वो होती है नेटवर्क मार्केटिंग. अगर आप आज भी अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको एक आइडिया चाहिए, एक प्रोडक्ट चाहिए, उसको डेवलप करना है, उसको उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करवानी है, उसको रजिस्टर करवाना है, फिर उसकी कंपनी बनानी है, फिर उसमें देयर इज लाइक अनलिमिटेड रिसोर्सेज दैट यू नीड फाइनेंशियली एज वेल एज योर एनर्जी वाइज एज वेल. बट नेटवर्क मार्केटिंग provides you with a business model which already exists. Products are already there and you just become part of that company and you start growing. You become a business owner in day one, right? And you can start earning from day one. So network marketing का concept जो है वो numbers के ऊपर depend करता है. You become a business owner and then you start attracting people towards you and coaching them and mentoring them, right? It is not a pyramid scheme. It is not a Ponzi scheme. It is absolutely ethical, halal and legal, especially it depends from company to company, right?
Forever Living is in 169 countries of the world, including Saudi Arabia, where I started my business, the biggest Islamic republic in the world, where it has been registered. So it's in all the Islamic states as well, and many other countries of the world where their marketing plan has been approved and it is there. So it's a numbers game. For example, there's no secret. I simply showed 1,100 people the business plan. 800 said no, signed up 200 people. 75 actually did something. 25 took it seriously, and 9 made me a millionaire. So that is the concept, right? Spreading the word around and getting people onto you start in your own capacity, and then throughout the world you share the opportunity with people. They join hands with you. There is multiplication in your business and your business grows, right? इसका concept ऐसे समझने, अगर आपने कभी एक स्नो का पहाड़ देखा हो और उस पे छोटी सी एक बॉल हो स्नो की, जो ऊपर टॉप पे हो, वो नीचे रोल होती हुई आ रही हो, तो जब जैसे जैसे वो नीचे आती है वो बॉल ऑफ स्नो बड़ी होती चली जाती है, राइट? And by the time it comes down, it's a big, huge ball of snow. So that is the concept of network marketing, that from all over the world, people can join hands with you and they can all work towards the same business, that is your business, right? Let's see how different powerful and successful people in the world, what do they say about network marketing. आप सभी इन लोगों को जानते हैं जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. Bill Gates, he's the richest man in the world, owner of Microsoft. He said that if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing, right? ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, आप बिल्कुल इसको गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे इनकी स्पीचेस देख सकते हैं on network marketing. Obviously when they started their businesses, जब network marketing का concept नहीं होगा, right? But now they understand the real potential of network marketing and they know that ये कहते हैं, हालांकि इनको पैसे की क्या कमी है, right? He's the richest man in the world and he says that if I was given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Donald Trump, he's the ex-president of USA. He's been the most powerful individual in the whole wide world. He said that if I were starting over today, I would make millions in the network marketing industry. Right? उन्हें भी इसका potential पता है. These are people with insight. These are people who've seen the power and wealth as well. Abdul Kalam, ex-president of India, said that network marketing is the fastest growing business of the 21st century, which must be joined by every young man and woman globally. इन्होंने तो यहाँ पे बात ही खत्म कर दी कि किसी को भी इस सेंचुरी में, अगले 10 साल में, 20 साल में पैसा कमाना है, वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ले, राइट? और क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इसी के अंदर है. अगर फ्रॉम द स्क्रैच अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो, मेरे ख्याल में आपकी जो ग्रैंड चिल्ड्रन की जनरेशन है वो उसका फल काटेंगी और उससे फायदा उठाएंगी. आप तो अपनी जिंदगी में उससे इस तरह से नहीं इंजॉय कर सकते अपनी यूथ में, अपनी जवानी में, अपने बच्चों के साथ, जिस तरह के आप नेटवर्क मार्केटिंग को यूज करते हुए एक स्टैब्लिश बिजनेस का पार्ट बने और एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर बने और उसको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं. Right? So these are the things that have been said about network marketing. Now the question is कि कौन सी network marketing company को join किया जाए? अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे options नजर आते होंगे. बहुत सारे लोगों ने अप्रोच भी किया होगा, किसी को किसी कंपनी ने, किसी कंपनी ने किसी कंपनी में. The company is as good as the products it produces. सिंपल सी बात है. हमने सबसे पहले ये देखना है ये कंपनी है किस चीज की, इसकी मार्केट प्लेस है क्या. एक तो ये कि ये कितनी स्टेबल है. Forever Living is a 44-year-old company which started in United States, Arizona, right? जो भी चीज अब USA की होती है या अमेरिकन बेस्ड होती है, उसकी तरफ ऑलरेडी एक रुझान चला जाता है कि ये एक स्टेबल चीज होगी, ये एक अच्छी चीज होगी, ये एक लेटेस्ट चीज होगी, राइट? टेक्नोलॉजी वाइज भी और वैसे रिसर्च वाइज, प्रोडक्ट वाइज, everything wise, right? Because they are much advanced. If I'm from Pakistan, then I can of course compare a product that is produced in Pakistan with a product over there. I love my country, but again, talking about facts. तो कल को कहीं हमें कोई कहता है कि नोकिया का पार्ट बनना है बिजनेस में या फिर आईफोन का, I will definitely say iPhone, right? Why not? It's an international brand. So Forever Living started in United States and now it's in over 169 countries of the world, right? It has seen 44 years of continuous growth. Self cash rich है, debt free है, यानी कि इनके अपने they've never borrowed anything from anybody. It's a very stable company.
जिनकी अपनी हेड ऑफिसेज हैं, जितनी कंट्रीज में ये हैं, उनके जितने भी हेड ऑफिसेज हैं और प्रोडक्ट सेंटर्स हैं, दे आर ऑल ओन्ड बाय फॉरएवर लिविंग। इनकी जो फील्ड्स ऑफ एलो हैं, दे ओन देम, एकर्स ऑफ फील्ड्स ऑफ एलो इन द डोमिनिकन रिपब्लिक, एरिजोना, डेलिस। मैंने खुद देखा है। आई मीन, आई एम नॉट जस्ट सेइंग दोज थिंग्स बिकॉज आई रेड देम समवेयर, या मैंने किसी से सुना है, मैंने खुद देखा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और कैसे देखा है, बिकॉज इन 2018 वी वर इनवाइटेड, मैं आगे बताऊंगी, जो इनके ट्रैवल इंसेंटिव्स हैं जो ये हर साल करते हैं, अपने क्वालिफायर्स को बुलाते हैं, उनमें से 2018 में जो इनकी ग्लोबल रैली थी वो एरिजोना में थी, जहाँ पे हमारा हेड ऑफिस है। तो आई हैव बीन देयर इन 2018 विद माय फैमिली टू एरिजोना। और ये जो आपको नजर आ रहा है इनका हेड ऑफिस, आई हैव विजिटेड इट पर्सनली। अगर कोई मेरे फेसबुक या इंस्टा पे है तो यू कैन गो एंड सी माय स्टोरीज एज वेल ओवर देयर। Okay, I've been to these to this head office. I've been to the fields of aloe. I've visited their pharmaceuticals and nutraceuticals, and I've met the owner family of Forever as well. Rexmon is the owner, and his family is it's a family-run business. ठीक है, so I've seen all of that, and seeing is believing. तो मैं first hand experience आपको बता रही हूँ of seeing what the company is, उसका मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है। और सिर्फ क्वालिफायर्स ही 18,000 थे, तो आप समझो कि इनके बिजनेस ओनर्स कितने होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट के, जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि व्हाट आर दे प्रमोटिंग, व्हाट आर दे प्रोड्यूसिंग, व्हाट आर वी गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ। Forever Living has a proven business model which is based on quality products, and they are based on aloe vera. Aloe vera का सबको पता है, it's something that has been known to mankind for ages. कोई नई चीज नहीं है, कोई नई टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हम, कोई नई चीज प्रोड्यूस करके सामने नहीं ला रहे मार्केट के कि पहले उनको समझाना पड़े कि अच्छा ये चीज है, या ये नई डिस्कवरी है, या इसका ये बेनिफिट है। It's aloe vera. It's been known to mankind for ages. Cleopatra, she used to bathe in aloe vera for her beauty and for her skin and for her hair, right? And aloe vera is known for its health benefits as well. So Forever Living is the largest grower and manufacturer of organic natural aloe vera in the world, and the aloe vera that they produce is called aloe barbadensis. अब कोई कहे कि हम अपनी गार्डन से उठा के वो प्लांट यूज कर लें, मुंह पे लगा लें या खा लें, it has more than 300 varieties. एलोवेरा एक प्लांट है जिसकी 300 से ज्यादा वेराइटीज हैं, और हमें नहीं पता कि कौन सा वाला हमारी सेहत के लिए या हमारी स्किन के लिए या हेल्थ के लिए अच्छा है। The one that is the most beneficial and naturally produced is called aloe barbadensis, and that is what we grow, and that is what is in our products. राइट, अ लिटिल बिट मोर अबाउट द कंपनी। थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स में आज इसलिए बता रही हूँ कि कंपनी पे रिसर्च आप खुद भी कीजिएगा। यू डोंट हैव टू बिलीव इन व्हाट आई से, आप खुद भी रिसर्च करें, यू विल फाइंड एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द नेट, देन यू विल बी वाइज इनफ टू टेक आउट द बेस्ट आउट ऑफ दैट। पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, लेकिन हमें अल्लाह ने अकल दिया, हमें पता है कि हम वी कैन मेक आउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, राइट। फॉरएवर लिविंग इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब है कि हर स्टेप जो होता है ना, प्लांट प्रोड्यूस करने से लेके, प्लांट ग्रो करने से लेके प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन पे, हर चीज कंपनी खुद करती है। दे डू नॉट आउटसोर्स एनीथिंग टू एनीबडी, राइट। जिस तरह के नॉर्मल कंपनीज होती हैं, उनके हम बिल बोर्ड्स देखते हैं, उनके हम टीवी पे एड्स देखते हैं, रेडियो पे एड्स देखते हैं, हम उनकी शॉप्स पे उनके प्रोडक्ट्स देखते हैं, लेकिन फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स इस तरह हम नहीं देखते। इट्स द कंपनी and then it's us directly under the company. We are the direct business owners. We get products directly from the company. That is why the company gives us such good bonuses in terms of commission, और जो हमें profit वगैरह मिलता है, यानी 30% से शुरू होता है हमारा profit when we join the business, and it goes up to 48%. क्यों? क्योंकि जो कंपनी है वो इन सारी मिडिल टीयर्स के ऊपर खर्चा नहीं करती, ना ही एडवर्टाइजमेंट्स पे, ना टीवी पे, ना बिल बोर्ड्स पे, ना डिस्ट्रीब्यूशन पे, सब चीज इन हाउस होती है। From the way they grow their plant, I've seen every single plant is hand harvested. Not even machinery is used on their fields. और वो तो जाहिर है वो health benefits की वजह से वो करते हैं कि they don't use herbicides and pesticides on the fields.
टोटली नेचुरली प्रोड्यूस होता है एलो, और विद इन 2 आवर्स जो वो हैंड से हार्वेस्ट होता है, एंड देन इट गोज इनटू आवर पॉट्स एंड आवर ट्यूब्स विद इन 2 आवर्स ऑफ हार्वेस्टिंग इट. डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, एवरीथिंग इज डन बाय द कंपनी. सो द कंपनी स्टार्टेड विद वन प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड द एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं. और अब in the last 44 years they have over 300 products in their range. और जो categories हैं वो है hair care, skin care, animal care, health and nutrition and weight management. ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप किस चीज पे एक्सपर्टीज हासिल करके कौन से प्रोडक्ट्स यूज करके उसके ऊपर अपना बिजनेस बेस कर सकते हैं, राइट. सो इफ यू सी on the screen, this is what an aloe vera plant looks like. अगर किसी ने पहले नहीं देखा, it looks like a cactus, and when you split it open you can take out the inner leaf gel. That is where the goodness lies. बहुत सारी companies के अगर आप aloe vera products देखें, they are usually green in color. It's because they just take the whole plant, they grind it, and they make the products. But in our company, we just use the inner leaf gel and we put it into our products. That's why they are so effective. Thirdly, product trainings. सब कहेंगे कि अच्छा हमने ज्वाइन किया है तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट. ऐसा जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम अवेलेबल है दैट यू जस्ट प्लग इनटू द सिस्टम एंड यू गेट स्टार्टेड. आपको किसी किस्म के प्रायर एजुकेशनल बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज डन फॉर यू. हमारी लाइव ट्रेनिंग होती हैं, रिकॉर्डेड होती हैं, जूम पे होती हैं और ऑनलाइन भी होती हैं. बिकॉज वी आर अ ग्लोबल बिजनेस, इट इज नॉट कंपल्सरी कि जब कोई ट्रेनिंग हो रही हो तो उसी वक्त आप ज्वाइन करें उस ट्रेनिंग को. यू कैन ऑलवेज कैच अप ऑन रिकॉर्डिंग बिकॉज वन टाइम डज नॉट नेसेसरली सूट्स एवरीबडी. माई टीम इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं कनाडा में हूँ, मेरी टीम ऑस्ट्रेलिया में भी है, और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में 14 घंटे का फर्क है, बट वी आर स्टिल वर्किंग टुगेदर फ्लेक्सिबली फ्रॉम होम, राइट. सो दैट इज द potential of this business and beauty of a global business. So we have trainings on everything, on network marketing, on products, how to sell them, how to retail them, how to build a team, how to talk to people, every single thing. On social media, अगर कोई कहता है कि social media पे मैं बिल्कुल nil हूँ, like I did not know anything. मेरा एक Facebook पे छोटा सा account था जिसमें सब मेरे सिर्फ friends थे. But with the passage of time, I've learned all these platforms slowly, steady, along with doing my business. And now, I use everything. So you're going to learn as you grow. Now, what is it that you have to do? Karna kya hai? When you join a network marketing company, it's basically a combined power of a network of home-based business owners. जैसे मैंने बताया, मेरी टीम में 2500 से ज्यादा लोग हैं, right? और हर कोई अपनी कैपेसिटी में अपने अपने बिजनेस पे काम कर रहा है, but they are all under the umbrella of Soaring Eagles, and this is a combined power. It's called duplication. If I'm able to give 2 hours in a day, but I have a huge team, everybody is giving 3-4 hours a day. हर रोज के हिसाब से मेरे बिजनेस में कितने आवर्स जा रहे हैं, हजारों के हिसाब से आवर्स जा रहे हैं, right? That is called the power of duplication, and you can do the same. You start with yourself, and then there'll be network of people joining you from different capacities. They will be doing their own business. You will be coaching and mentoring them, and there will be duplication. Now, there are 2 things that we do in this business very simply. कोई complicate नहीं करना चीज को. I mean, you don't have to complicate the system. You have to share the products, share the opportunity. 2 चीजें करनी है. अभी मैं क्या कर रही हूँ? I'm sharing the opportunity with you. There is a business opportunity. This is the company. This is what we do. You're more than welcome to join. I'm going to coach and mentor you. That's it, right? And you don't need to become a team leader from day one. Me, along with all my team leaders, we are here to help and support you. We do the presentations, we do the trainings, and you and your team benefit from it and you grow, right? Share the business, share the opportunity. Sorry, share the products and share the opportunity. Of course, हमारे पास एक tangible, एक consumable product है जो हमें प्रमोट भी करना है. दैट इज वाई वी आर अ बिजनेस ओनर. बिजनेस में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट होता है या कोई सर्विस होती है ना जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं. सो हमारे पास बने बनाए प्रोडक्ट्स हैं जो हमने यूज करने हैं और उनको प्रमोट करना है. कोई डोर टू डोर जाके सेल नहीं करनी, कोई पुशी सेल्स नहीं करनी. वी डोंट नीड टू स्पैम एनीथिंग, वी डोंट नीड टू गो आफ्टर पीपल. वी जस्ट नीड टू यूज द प्रोडक्ट्स एंड स्प्रेड बाय वर्ड ऑफ माउथ. आज हम कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने और अच्छा लगता है खाना, कितने सारे फ्रेंड्स को बताते हैं ना कि वहां का खाना अच्छा था,
लेकिन जब वो लोग जाते हैं वहाँ खाना खाने, तो हमें तो रेस्टोरेंट एक भी पैसा नहीं देता फॉर रिकमेंडेशन। इसी तरह हम कोई ड्रामा देखते हैं, मूवी देखते हैं, बुक पढ़ते हैं अच्छी, कितने लोगों को ऑटोमेटिकली बताते हैं, बट व्हेन दे डू द सेम थिंग वी डोंट गेट पेड फॉर द रिकमेंडेशन। बट इन दिस बिजनेस व्हेन यू यूज द प्रोडक्ट्स और आपकी स्किन बेहतर हो गई, आपको अच्छा, आपका हेयर फॉल रुक गया, आपके जो वेट मैनेजमेंट है वो बेहतर हो गई, आपका वजन कम हो गया हेल्दी तरीके से, आपके बहुत सारे आपके आपके जानने वालों के मेडिकल इश्यूज थे, आर्थराइटिस का था, डायबिटीज का था, और जोड़ों में दर्द था, या फिर मिग्रेन का प्रॉब्लम था, जो भी था वो सप्लीमेंट से, नेचुरल सप्लीमेंट से और नेचुरल प्रोडक्ट से ठीक हो गया। आपने इतने लोगों को और बताया, इंटेंशन भी ये हुई कि उनकी हेल्प हो जाए, राइट। और उस रिकमेंडेशन पे जब उन्होंने वो चीजें परचेज की from the company, you will get the commission for recommendation. और वो कैसे होगा? Everything is automated. When you join the business, you get a website of your own and you get shop links, right? You don't have to first purchase the product and then sell it to the person. If they are interested in something that you've liked and you've recommended, you will just pass on your shop link to them wherever they are in the world. वो उस पर क्लिक करेंगे, वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे ऑनलाइन, कंपनी उनको डिलीवर करेगी और आपको उसका कमीशन मिल जाएगा, बिकॉज यू वर द रेफरल. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. यू कैन डू thousands of referrals in a day. It's up to you. And similarly, when you show the business to people, जैसे ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, she was my mentor and she was showing me the business के मैं ऐसे करती हूँ ऐसे. जब मैंने इनको ज्वाइन किया, she got a sponsoring bonus for bringing me into the business. Now it's up to you, आप कितने जितने चाहे लोगों को ज्वाइन करवाएं और जितने चाहे बोनसेस लें, राइट. व्हाट डू यू नीड टू डू नाउ? अब उस पे आ जाते हैं कि हमने करना क्या होता है. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा नेटवर्क मार्केटिंग का भी, और ये कि हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं. प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं और अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करते हैं, और मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हमारे पास आती हैं दोनों तरफ से, राइट. However, there are 3 positions जो आप assume कर सकते हैं if you want to be part of the system. जब आप शुरू करते हैं अपना business, you are a product promoter, right? You are at 30% commission. कहीं भी दुनिया में आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई चीज शुरू करते हुए ही आपको, आप किसी चीज का भी पार्टनर बनते हैं, बिजनेस का, किसी कंपनी का, किसी के साथ जॉइंट वेंचर करे होते हैं, कभी भी 30% से तो नहीं शुरू होता, बहुत कम से शुरू होता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता है. बट इन द बिगिनिंग दिस कंपनी इज गिविंग यू 30% कमीशन. थोड़ा सा मैं नंबर्स में समझा दूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में या चलें कहीं भी हैं, 100 रुपीज या 100 दिरहम्स या $100 की अगर वो चीज है जो आपने सेल की है, $30 स्ट्रेट अवे उसमें से कंपनी आपको दे देगी. 30 out of 100 because you recommended that. That's called 30% commission. ठीक है. So you can be a product promoter and there is no cap to the income you can earn. आप जितने चाहे लोगों में ये बात फैलाएं globally. Even if I'm in Canada, I can have clients in Pakistan, I can have clients in Australia, I can have clients anywhere in the world. The more I promote and spread the word around, the more people who purchase from my website, not from me. मैं उनके पास जाके उनको नहीं सेल करी, just through recommendation. मैंने अपनी स्टोरीज पे लगा दिया, सोशल मीडिया पे लगा दिया, फेस टू फेस बता दिया, फोन कॉल पे. All these things will be taught to you how to do it, how to promote it. You will get on every sale that goes through you, you will get a 30% commission straight away from the company, and now sky is the limit for you, right? So if you are a product promoter, you can look at beginning the 1,000 to 3,000 dirhams per month. ये मैं बहुत conservative figures बता रही हूँ on the past averages. You can earn much more than this, you can earn much less than this, depending on how much you want to work, right? Which will map on to around 42,000 Pakistani rupees to 1,30,000 Pakistani rupees to start off with, right? If you want to earn more, you can become a team builder. राइट. टीम बिल्डर वो होता है, तस्वीर में देख रहे होंगे, जब मैं रियाद में थी, मैं ये शुरू में थोड़ा सा बताना भूल गई कि मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था, मैं सऊदी अरब में थी, रियाद में, और 3 साल मैंने वहां पे काम किया घर से बैठ के, एंड देन विद in 3 years, alhamdulillah, my business took a very good pickup and start and growth. Within 3 years, we were earning
more than enough to make a move to Canada. बहुत अरसे से हम लोग ये सोचते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, कि हम जाएंगे इमिग्रेशन के लिए, बट कभी हिम्मत नहीं होती थी कि वहां जाके पता नहीं हस्बैंड को या मुझे एकदम से कोई जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, हम स्ट्रगल ना करना पड़े, बिकॉज वी वर डूइंग प्रीटी वेल इन द मिडल ईस्ट. बट alhamdulillah, on the basis of forever, we were able to make that move, and फिर हम Canada move हो गए. I've been here for the past 4.5 years, और यहाँ से भी flexibly I am working with forever, right? यहाँ से भी घर बैठे, कोई मुझे वहां से रिजाइन करके यहाँ नहीं आना पड़ा, जब अपना लैपटॉप उठाया यहाँ आ गए, यहाँ से काम शुरू हो गया. So this picture is when I was in Riyadh, and this was my small team when I was a team builder. Team builder वो होता है जो खुद भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हो और आगे उस अपने टीम मेंबर्स को कोच करे, मेंटोर करे कि वो भी प्रोडक्ट्स प्रमोट करें. एज अ टीम बिल्डर यू कैन गो अप टू 43% कमीशन ऑन एवरी रिकमेंडेशन दैट यू मेक. एंड बिकॉज आपकी एक टीम भी बन गई है, नाउ देयर इज डुप्लीकेशन इन योर बिजनेस, तो टीम जो काम कर रही है उसके उनके काम का कमीशन भी कुछ परसेंटेज कंपनी आपको देती है, बिकॉज यू आर हेल्पिंग देम, कोचिंग देम. जब आप इस सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ मेनी ट्रेनिंग्स वी डू, हाउ हार्ड वी वर्क विद द टीम, राइट? सो द कंपनी recognizes your efforts, and on the total business of your team members you are paid a commission as well. Same is the case with the team members. वो आगे अपनी टीम बनाएंगे, उनको अपनी टीम के काम का कमीशन भी मिलेगा if they are doing their part as well. Not just sitting and not doing anything and team बना ली और खुद हाथ पे हाथ रख के बैठ गए. No, there are particular requirements जो आपने खुद भी fulfill करनी है, so that you can get into the team leading bonus वाली income. वो सब इंशाल्लाह आगे जब मार्केटिंग प्लान समझाएंगे, when you join the business you will understand how that works. So you get 5 to 8% team leading bonus from your team's income as well. That comes to around 3,000 to 10,000 dirhams per month, or 1,30,000 to 4 lakh Pakistani rupees per month. It can be again much more than that. If you want to earn even more, you can become a business developer, which I am now, alhamdulillah. So business developer क्या होता है, जिसकी अपनी अच्छी बड़ी एक्टिव टीम हो और वो अपनी टीम को भी उसकी टीम भी आगे टीम बना रही हो, right? They coach their team members on how to build their teams as well, right? So एक ट्री ऑफ नेटवर्क, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो हमारा बन जाता है, जिसको हम बिजनेस डेवलपमेंट कहते हैं, right? As a business developer, and how you do that, it's all part of our training system, and you will know once you get into the system. You will be given access to our Facebook team pages, WhatsApp support groups where we work together and support each other. So as a business developer you are at 48% commission, and the team leading bonus goes up to 13%. तो आपकी तीनों streams of income हर लेवल के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं, आपकी रिटेलिंग की, आपकी टीम बिल्डिंग की, और आपकी टीम कमीशन की. So as a business developer, you can start at 10,000 dirhams and go up to, sky is the limit. You can start at 4 lakh Pakistani rupees, go up as much as you want, right? 3,000 USD and go up as you want. Now, there are so many reasons why you would say yes today. 8 minutes. Yeah. So like I said in the beginning, कि हर एक का different reason होता है for joining a business or for starting a new venture. If flexibility is your why, then you will definitely get flexibility with forever. Like I've already mentioned before, कि मेरा काम इतना ज़्यादा flexible है कि I can run it around every other thing. Yesterday I was out with my kids for a field trip. स्कूल से field trip था. बहुत सारी mothers volunteer नहीं कर सकी यहाँ पे कनाडा में, and they really wanted to go क्योंकि वो 9 to 5 जॉब करती हैं, तो they were not able to go. But I went. मैं सुबह चली गई, मैं दोपहर में 3 बजे तक वापस आ गई, and the rest of the day I did the other things. कल थोड़ा कम काम कर लिया, आज मैं घर पे थी, आज थोड़ा ज्यादा काम कर लिया. So you are your own boss. Nobody is going to come and knock at your door and say आज आपने काम क्यों नहीं किया, या आपने कितना काम किया, कितना नहीं किया. So you will be your own boss. You will decide how much you want to earn, how much you want to work, and when you want to work. Minimal investment is required in terms of your जो main investment है, that is your time, your effort, your energy. कि आपने शुरू में
मेहनत करनी है, ट्रेनिंग्स देखनी है, उनको उनके ऊपर काम करना है, उनकी एक्टिविटीज करनी है, देन यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स एंड वी ऑल डू दैट टुगेदर. In terms of financial investment, there is a small investment involved, which is again optional, but हम आपको उसके pros and cons बताएंगे कि why is it very important. Because it is a business where you are promoting consumable products. Consumable products क्या होते हैं जो हम everyday प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइजिंग लोशन, tooth gel, aloe lips, then aloe vera drinking gel, then supplements, day to day honey, day to day use के जो products होते हैं ना, skin care के हो गए, hair care के हो गए, those are the things we are promoting. तो जब हम वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं? ओनली व्हेन वी यूज देम आवरसेल्व्स. जिस तरह मैंने एक रेस्टोरेंट का आपको एग्जांपल दिया था, जब तक खुद नहीं जाके खाया होगा खाना, जब तक हम किसी को नहीं कह सकते कि वहां जरूर जाओ, वहां का खाना बहुत अच्छा है, राइट? सो द कंपनी हैज वेरी वाइजली मेड अ पैक. इट्स कॉल्ड स्टार्ट योर जर्नी कॉम्बो पैक. हर कंट्री में ये उसके हिसाब से होता है कि वहाँ की फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स क्या है. इसमें 20 to 22 हमारे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं पूरी रेंज के. हर कैटेगरी के थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एक दफा सिर्फ लेना होता है शुरू में, ताकि हम उसको देख के उसको यूज कर सके, उसको एक्सपीरियंस कर सके और फिर अपने टेस्टिमोनियल्स लोगों के साथ शेयर कर सके. आफ्टर दैट देयर इज नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल, देयर इज नो हिडन फी, देयर इज नो हिडन कॉस्ट. कोई मंथली वो नहीं है फीस टू रिटेन योर मेंबरशिप. वंस अ मेंबर, फॉरएवर अ मेंबर for this company. Once आपकी एक आईडी बन गई, you're a forever business owner, you will stay there for life. थोड़ा सा आपने गैप लेना है, थोड़ा सा आपने काम किसी वजह से नहीं किया, दोबारा आए, वहीं से शुरू कर लिया, and that's how it goes. So it's just ethical that when you're promoting something, you've already used it yourself. Just imagine आप किसी को कह रहे हैं कि ये शैम्पू और कंडीशनर यूज करो, बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपके बाथरूम में देखता है कि डव रखा हुआ है. What will we think about your ethics? कि आप खुद तो यूज कर नहीं रहे and you are asking us to use it, so nobody believes it. When I started my business, मेरा पहला इंटेंशन ही ये थी कि बॉक्स तो मैंने ले लिया है, लेकिन मैं काम सही से उसी वक्त शुरू करूंगी अगर मुझे ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे और मैं इनको genuinely and honestly promote kar sakungi. I started using the products. I absolutely fell in love with them. And then I don't think I even had to learn how to promote them, because I was naturally and automatically talking about these things with my sisters, cousins, friends, neighbors, everybody. And then it all spread by word of mouth. So that's how it goes. Income is uncapped. Like I said, the more you work, the more you will be able to earn. ये इस पिक्चर में आप देख रहे हैं हमारे कुछ सीनियर्स हैं in forever, and they've got the chairman bonuses check, which is the end of the year check, जो हमारी performance पे depend करता है. हर एक का check different है. It's based on their performance, right? इसी तरह हर महीने जो हमें बोनस मिलता है, that will be based on your activity throughout the month. जितना ज्यादा हमने काम किया होगा, उतना ज्यादा हम इनकम कर सकते हैं. Nobody is going to टेल यू योर वर्थ. जिस तरह हमारी सैलरीज में होता है ना, इनकम में, जॉब्स में, कि इतने आपको पर मंथ मिलेंगे. एक तरह से लोग ये हमें हमारी जो होता है ना कि दिस इज हाउ मच योर वर्क इज वर्थ ऑफ, आपको इतने पैसे मिलेंगे. लेकिन इस बिजनेस में, ये नेटवर्क मार्केटिंग में, यू कैन डिसाइड योर ओन वर्थ. जितना ज्यादा आप कमाना चाहते हैं उतना ज्यादा कमा सकते हैं, जितना रिलैक्स रहना चाहते हैं उतना रिलैक्स हो सकते हैं. इट्स लाइक अ ब्लैंक चेक every month where you write your own money in terms of how much you want to work, right? So there are some amazing incentives. मैं थोड़ी देर में ही बस खत्म कर रही हूँ प्रेजेंटेशन, और इनको बताने का बहुत बहुत जरूरी है, ये incentives बताना, क्योंकि जब मैंने ये प्रेजेंटेशन देखी थी, this is something that really took my heart away. राइट क्योंकि आप किसी भी कंपनी को, मैंने बहुत सारी कंपनीज को देखा हुआ है, काम भी किया हुआ है. कहीं पे भी मैंने ऐसे इंसेंटिव्स कभी नहीं देखे जो कि आप जिनको आप अचीव कर सकते हो और जिनको आप क्वालिफाई कर सकते हो. सो देयर आर, लाइक आई सेड, 2 global travel trips that the company provides every single year to all your qualifying members, right? वो हर साल 2 different amazing destinations पे हमें लेके जाते हैं क्वालिफायर्स को. नॉट टू एवरीबडी, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होता है, यानी पहले आपने मैनेजर बनना होता है. आफ्टर मैनेजर यू कैन क्वालिफाई फॉर ऑल दीज इंसेंटिव्स. लाइक आई सेड, आई बिकेम अ मैनेजर इन 5 months, तो वो भी बहुत अचीवेबल है. जब मैं कर सकती हूँ तो मैं कहती हूँ कोई भी कर सकता है, राइट? आफ्टर दैट देयर आर सम क्राइटेरिया दैट यू हैव टू फुलफिल, और इन टर्म्स ऑफ योर परफॉर्मेंस, कि आपने कितना बिजनेस किया है. ऑन दैट यू आर प्रोवाइडेड विद 2 ग्लोबल ट्रैवल ट्रिप्स. एक मई में होता है और एक अक्टूबर में होता है, जिसमें आपको वो आपका ऑन +1
एक और का पे करते हैं फॉर योर फ्लाइट, फॉर योर स्टे, फॉर खाना पीना, रहना, एक्टिविटीज, ट्रेनिंग्स, एवरीथिंग. सो मी एंड माई हस्बैंड ऑलवेज गो फ्री ऑफ कॉस्ट. हमारी टिकट्स भी कवर्ड होती हैं, हमारा रहना in the best 5-star hotels, and खाना पीना, activities, and then the trainings, everything is catered for. बच्चे मेरे हमेशा हमारे साथ गए हैं. हम लोग ने अभी तक 9 trips पे qualify किया है अल्हम्दुलिल्लाह in just 6.5 years, right? So every time I take my kids along with me, we pay for them and we take them. It's an amazing experience for them as well. ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, दिस वाज आवर वेरी फर्स्ट ट्रिप, और ये था क्रूज पे विद मॉन्टे कार्लो, बार्सिलोना एंड रोम. वी वेंट ऑन अ क्रूज फॉर 7 days थ्रू आउट दिस कोस्ट. और इतना जबरदस्त था वो कि पहला ट्रिप जब मैंने अटेंड किया तो मैंने कहा कि मैं ये ट्रिप्स कभी भी मिस नहीं करूंगी, एंड आई विल ऑलवेज वर्क हार्ड for these trips. So I've qualified for 9 trips ever since. We've been to Dubai, we've been to this Rome, Spain, Monte Carlo, we've been to Sweden, Dallas, Arizona, Thailand, Sydney. Thailand और सिडनी के लिए हमने क्वालिफाई किया था जब लास्ट 2 years में जब पेंडेमिक था, तो ट्रैवल बैन लगा हुआ था, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये हुआ नहीं था ग्लोबल रैली, क्योंकि एक दफा में 18,000 के करीब क्वालिफायर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट अलाउड. सो दे compensated us with cash. उन्होंने हमें उसके बदले में कैश दे दिया. Like it's a company that always rewards you for your hard work. अगर ट्रिप नहीं भी हो सका तो उन 2 सालों में we were given cash when we qualified for the trip. और अगेन दोबारा से रिज्यूम हो गए ये ट्रिप्स, और ये इंशाल्लाह दिस सैटरडे इंशाल्लाह we are going to Cancun, Mexico for our October trip, and then next year मई में वी आर गोइंग टू बाली, इंडोनेशिया. सो अल्हम्दुलिल्लाह जिन जगहों के बारे में कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी जाएंगे फॉरएवर के थ्रू, वो भी पॉसिबल हो गया, एंड वी बीन ट्रैवलिंग द वर्ल्ड विद फॉरएवर. चेयरमैन बोनस इज एंड ऑफ द ईयर बोनस जो आप हाई अचीवर्स को मिलता है if you've done an amazing job throughout your 1 year. आपको उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे एक सरप्राइज चेक मिलता है, which is over and above all the monthly bonuses that you get. मंथली तो इनकम आपकी आती ही है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर पे जब हमारा वो मई वाला ट्रिप होता है, उसमें ये बोनसेस दिए जाते हैं, एंड यू ऑल ओपन इट लाइक अ सरप्राइज. इट कैन बी $1,000, इट कैन बी $1 million. It really depends on how much work you have done throughout the year. So I've qualified for that twice. एक दफा 6,500 USD मिले मुझे, एक दफा 8,500. ये सब बताने का मकसद आपको इम्प्रेस करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये है कि अगर मेरे जैसा बंदा ये सब कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं. दूसरा, ये कंपनी सिर्फ प्रोमिसेस नहीं करती, इट रियली डिलीवर्स व्हाट इट प्रोमिसेस. जो कुछ भी प्रेजेंटेशन में मैंने देखा था, मैंने कुछ ही अरसे में देख लिया. 5 महीने में तो आई बिकेम अ मैनेजर अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मेनी ऑफ माय टीम मेंबर्स एज वेल. And after that, within 1.5 years, I was able to qualify for all these incentives as well. Car plan is the third incentive जिसके लिए आप qualify कर सकते हैं. And if you qualify for that, you get extra cash every single month for the next 36 months. यानी 3 साल के लिए आपको extra income और मिलती है over and above जो हम already कमा रहे हैं, जिससे आप अपनी किस्तों पे गाड़ी ले सकते हैं, और अगर गाड़ी नहीं लेना चाहते तो you can use it anywhere else. Like here in Canada, we use that money to twice or thrice, I think. अब तो मुझे याद भी नहीं रहता कितनी दफा we've qualified for it. So अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा ये गाड़ी ली थी जो आपको नजर आ रही है, और दूसरी दफा we paid for our children's private education here in Canada, because I wanted them to, I did not want them to go to public schools. मैं उनको इस्लामिक स्कूल में डालना चाहती थी, तो we paid for that through the car plan. So you can do anything with that money. You don't need to buy a car with that. कहने का मतलब ये है कि they reward you for your hard work. मेरी बहन पिछले 26 years से पाकिस्तान में एक स्कूल चला रही है. She is the owner. और जब वो देखती है कि मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, ये अचीव हो रहा है, तो वो बहुत proudly कहती है कि it's an amazing company that you're a part of, Bushra. You should be very grateful. क्योंकि मैंने नहीं देखा, मेरा तो अपना बिजनेस है, अपना स्कूल है, right? And I cannot think of going abroad, international trips, take my entire family with me twice a year. किस कदर महंगाई है, और ये तो सब बहुत ही लग्जरी वाली बातें हैं. So alhamdulillah, they do, it's a big company, and it can give you that kind of incentives, right? So with this we come to the end of our presentation. I hope you liked what you saw. जितनी excited मैं थी इस presentation को देख के, I hope you are the same. But of course, there is no hurry to jump into it. I did not take much time. मैंने quickly अपना थोड़ा homework किया,
I asked the question जिसने मुझे मेरी फ्रेंड है यूके में, उन्होंने मुझे दिखाई थी ये प्रेजेंटेशन। जितने मेरे सवाल थे मैंने उनसे फटाफट किए, अपने अपने कंफ्यूजन्स क्लियर किए, एंड आई जस्ट जंप्ड इनटू इट एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। Alhamdulillah, it has worked really well for me. If there's one thing that I feel very grateful about every morning after my family, my home, and my parents and my children and everything, it's this opportunity जो अल्लाह ताला ने मुझे दी, that I am a part of something really amazing. So now I will open up. Thank you very much, वैसे everyone, for bearing with me and for being there throughout the opportunity, for throughout the presentation. अब मैं 1 minute देख लेती हूँ questions, and anybody who wants to ask a question can unmute themselves and ask me questions as well. यहाँ पे मेरे लीडर्स दूसरे भी हैं जो आंसर कर रहे होंगे। मैं ऐसा करती हूँ, आई जस्ट अनम्यूट वो जो settings में जाके, and you can ask me questions. Anybody who wants to proceed with the registration and with the company and everything, they can get back to the person who invited you to the presentation. जिसने भी आपको invite किया है उसके पास आप जा सकते हैं, वो आपको बताएंगे कैसे register करना है, कैसे start करना है. Once you register, registration is just a 5-minute form that you have to fill online. You have to order your box, you have to get your ID. आपको फौरन अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, अपनी शॉप लिंक्स मिल जाएंगी, आपकी ID 169 कंट्रीज में एक्टिव हो जाएगी, जिसके अंदर आप अपना बिजनेस स्प्रेड कर सकते हैं. फ्रॉम day 1 you can start earning, and then you will be given access to all our Facebook team pages, all our WhatsApp support groups, and your training will start. सबसे पहले आपकी हमारे साथ एक 1-to-1 Zoom meeting होगी, जिसमें we'll tell you exactly what to do now, and then you can your training will start along with your business. चलिए, मैंने ये कर दिया. Allow participants to unmute themselves. If anybody has any question, please go ahead, unmute yourself and ask me. अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका स्पीच इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग माशाल्लाह, very inspiring alhamdulillah. The name is why the name is forever? Sorry, why this actually forever means forever it is applicable. Can I explain for that? The company, you're saying why is the company name Forever? Yes madam, yes madam. अच्छा, फॉरएवर कंपनी नेम तो कोई भी हो सकता है. आई एम श्योर देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंकिंग दैट वेंट बिहाइंड दिस. इट्स अ 44-year-old कंपनी, और जब उन्होंने स्टार्ट की होगी तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही इसका नाम लिखा होगा. माइक्रोसॉफ्ट का नाम माइक्रोसॉफ्ट क्यों है ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आई वाज नॉट द वन हु स्टार्टेड दैट. बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, it's actually called Forever Living Products. So maybe they had that insight behind it, that it's a company that is going to go global. Although ये स्टार्ट हुई थी एरिज़ोना में, यूनाइटेड स्टेट्स में, बट नाउ इट्स इन ओवर 169 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो जो विजन था इनके ओनर्स का, और जिन्होंने ये कंपनी शुरू की थी, उनका विजन यही था कि इसको आगे से आगे स्प्रेड करेंगे इन ऑल द कंट्रीज, एंड देन इट्स जस्ट गोइंग टू बी लाइक अ लेगेसी बिजनेस. लेगेसी बिजनेस भी मैंने आपको समझाया था कि ऐसा नहीं है कि एक पोजीशन पे आके आप मैक्सिमम अचीव कर लिया है and now that is the end. There is no end to it. If you want it, the more you work, the more madam ordering for the box, it is not clear madam how it will be. Please guide us, okay, for the steps, inshallah. Right, Alina, sure. Whoever invited you to the presentation today, वो भी आपको सही से बताएंगे कि ऑर्डर कैसे करना है. Actually, when you register online, जिस भी कंट्री में आप हैं, उसके हिसाब से आपको जिसने इनवाइट किया है इस प्रेजेंटेशन में, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपने रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करते वक्त ही अपना बॉक्स ऑर्डर करना है ऑनलाइन. राइट, ऑनलाइन जो पाकिस्तान में है वो भी कर सकते हैं. इफ दे देयर इज अ सेपरेट सिस्टम फॉर एवरी कंट्री, अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल. 5-minute फॉर्म होता है जो आपने फिल करना होता है, साथ ही अपना बॉक्स ऑर्डर करना होता है. बॉक्स आपको 2 to 3 days में डिलीवर हो जाता है, आपकी आईडी मिल जाती है, और आपको वेलकम ईमेल आ जाती है, आपको फेसबुक और टीम पेजेस पे ऐड कर दिया जाता है, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट द बिजनेस. ऑफ कोर्स जो उसकी डिटेल्स है वो आपको आपकी स्पॉन्सर बताएगी, जिसने आपको आज इनवाइट किया है. Hello, Assalamu alaikum. How are you?
अल्हम्दुलिल्लाह. Who is this? पहले अपना नाम बताइए. इंशाल्लाह मैडम, इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. और एक और बात है, एक मिनट जी, इसका प्रोडक्ट का जो ये जो है ना, सॉरी. रेट है वो बहुत ज्यादा है. वो बहुत पीपल है ना, वो उतना एफर्ट नहीं कर सकते. वो 1 kg पैकेट जेल का थोड़ा कमती करके ऐसा मिल सकता है सेक्शंस में होगा, तो इंशाल्लाह इट विल बी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन टू ट्राई. Right, right, Alina. Now, next time, everyone, inshallah, please raise your hand, and I'm going to unmute yourself myself, ताकि हमारे पास duplicate वो ना आ रहे हो. ठीक है? Alina, I'm going to ask. मैडम, द डिस्कशन आई नीड टू डिस्कस. Okay, so Alina का question था that products are a little expensive. उसका जवाब ये है कि see, everybody in every country, people do have the buying power. It's just about their choice कि उन्होंने पैसे कहाँ spend करने हैं, right? ये especially after the pandemic, जब लोगों को इतनी ज़्यादा health conscious हो गए हैं लोग, they are spending more on their health, their wellness, their immunity. अब आप देख लें, पहले कोरोना आया, उसके बाद फिर मंकी पॉक्स आया, अब डेंगू आ गया है, और पता नहीं कौन कौन से वायरसेस आ गए हैं दुनिया में. यहाँ पे भी इवन इन कनाडा, आफ्टर द 2 years ऑफ इंटरनेशनल पेंडेमिक, लोगों की इम्यूनिटी इतनी लो हो गई है क्योंकि हर किसी को ही कोरोना हुआ है. उसकी वजह से इम्यूनिटीज इतनी लो है कि कॉमन फ्लूज इतने ज्यादा हो रहे हैं. जिस डॉक्टर के पास जाओ कह देता है अभी 50 बच्चे आज मैंने देखे हैं, फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल कॉमन फ्लूज के. So now people, mothers like me and you and everybody in general, we are more focused into towards health and wellness products. बेशक वो महंगा हो, we will spend less on other luxurious products and we will spend more on our immunity. तो होता ये है कि from your trainings and when you use the products, आपको खुद पता चलेगा कि forever के products, एलोवेरा खास तौर पे हमारी इम्यूनिटी, हमारी एनर्जी लेवल्स के लिए कितना अच्छा है. एंड उस तरह से हम उसको प्रमोट करेंगे तो इंशाल्लाह देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केट फॉर दीज प्रोडक्ट्स. पूरी दुनिया में लोग लेते हैं. वो अगर आप पाकिस्तान में तो 10,000 का तो एक लॉन का जोड़ा भी लेडीज लेती हैं, राइट? अपनी अपनी चॉइस की बात है. सो अगर वो उनको वाकई इस चीज की जरूरत होगी एंड दे नो, दे फील दैट देयर हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, देयर फैमिलीज हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, दे विल डेफिनेटली गो फॉर इट. अच्छा, अब जिसने हाथ खड़ा किया हुआ है, मैं एक एक करके उनको अनम्यूट करूंगी एंड देन आई विल आस्क देम क्वेश्चन, their question. Rabia, can you unmute yourself? Ji, Vishwa, the question is basically, do I have to make my own Instagram or Facebook page to promote this? Well, As a product? yeah, yes, you don't have to, but social media is one of the things that we teach for promoting the product. Social media में आ जाता है Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता ही हैं. तो अगर आपका अपना ऑलरेडी अकाउंट है, आप उसको यूज करते हुए भी प्रमोट कर सकते हैं. अगर आप नहीं बनाना चाहती हैं, इट्स एंटायरली अप टू यू. आप एक दो प्लेटफॉर्म्स पे काम करना चाहते हैं, वो भी ठीक है. बट वी आर गोइंग टू टेल यू द पोटेंशियल ऑफ एवरी प्लेटफॉर्म के किस से आप कितनी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, किस पे आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं. तो डेफिनेटली आपको बनाना तो अपना ही होगा, बट यू विल गेट ऑल द ट्रेनिंग. यू विल गेट. राबिया, आंसरिंग योर क्वेश्चन, आपको अपनी वेबसाइट तो मिलेगी ही फॉरएवर की तरफ से. इट विल बी योर ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आप अपने क्लाइंट्स को दे सकती हैं उसका लिंक, और आपके क्लाइंट्स आपकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं. उस पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा, आपकी शॉप लिंक होगी, एवरीथिंग एज इफ आपने वो वेबसाइट खुद बनाई है. सो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर यू इफ यू वांट टू कीप इट टू दैट. बट इफ यू वांट टू लिवरेज द मैग्नीट्यूड ऑफ सोशल मीडिया दीज डेज, क्योंकि सोशल मीडिया इज एवरीथिंग राइट नाउ, स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक. लोग हर चीज जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं. लोगों ने शॉप्स पे जाना छोड़ दिया है, मॉल्स जाना छोड़ दिया है, दफ्तर भी जाना छोड़ दिया है. घर से ही सब लोग काम करते हैं और घर से ही सब लोग बहुत कंफर्टेबल है. So that is the answer. That is, that is the way it's going to be in the future. जब एक revolution आती है ना, तो हमें भी उसका एक part बन जाना चाहिए as soon as possible before we are too far behind other people. राइट? जैसे एक फोन है, मैं उस दिन भी सबको बता रही थी कि आजकल फोन के बगैर, अलीना 1 मिनट में आपको म्यूट करूंगी. आपका जो भी क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज टाइप इट, बिकॉज आई वांट टू गिव चांस टू अदर्स एज वेल. सॉरी अबाउट दैट. एनीवेज, जैसे फोन का जो था, कुछ अरसे पहले तक, हमारे बचपन तक तो फोन जो
स्मार्टफोन्स हैं वो नहीं थे, या फिर थे तो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन अब 5 मिनट भी फ़ोन के बगैर समझ नहीं आता कि बाहर कैसे जाएँगे? फ़ोन अगर नहीं है, घर पे रह गया है, ओह माय गॉड पता नहीं क्या हो गया? अगर बच्चे को कहीं भेजा है, फ़ोन के बगैर नहीं भेज सकते। आई मीन फ़ोन के बगैर ज़िंदगी लगती है कि शायद जैसे है ही नहीं। सो दैट इज़ द रेवोल्यूशन दैट केम अ फ्यू इयर्स अगो। सोशल मीडिया इज़ द सेम राइट नाउ। जितनी जल्दी हम उसका पार्ट बन जाएँगे, वेरी सिंपली, आपको उसका एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, पर उस वो अच्छा है। Acha Nazia, I will unmute you now. If you have any question, you are raising your hand. Yes, Bushra, I have a couple of questions Yeah, here. yeah. I missed out the part, where you were talking about the form. So where do we get the form from? Are we supposed to go on that company's link and get Yeah. that from? Yeah. Secondly, you talked about, Can I answer that? sorry. Sorry. Yes, sure. Yeah, so registration form is you're going to get through a link that you will. Nazia, if I may ask, who invited you to the presentation today? Well, it was you actually. It was me. Okay, so I'm Yeah. going to, after this presentation, you're going to contact me, and I will send you the link of the website where you'll register yourself. It's very very simple, self-explanatory. वहाँ आप जाएंगी, form होगा, everything, and I'll guide you. जिसको भी जिसने इस पे invite किया है, वो form के बारे में और registration के बारे में उन्हीं से पूछेंगे, और वो आपको guide करेंगे, और वो 5 मिनट में, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेगा, वो हो जाएगी registration इंशाल्लाह, ठीक है? They'll tell you. I'm going to tell you after this. Your second question, please. The second one was the same one actually, but you said that your contact referee has to be approached for the form thingy. You've already answered that. Thank you. Yeah. Okay. All right. Thank you very much, Nazia. All right. So, Humaira, जिसका question answer हो गया, वो अपना हाथ नीचे कर ले. Lower your hand, please, so I know. Humaira, can you unmute yourself? You have your hand raised. Assalamu alaikum. Walaikum salam, This is Humaira Mushtaq. जी, Humaira. Thank you so much, Bushra, for your time and detailed explanation. But still, I have question. For example, मैं यहाँ सऊदी अरेबिया में हूँ और आपको पता है मिडिल ईस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट आता रहता है. मैं अपने फ्रेंड से कहती हूँ दिस इज द प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरएवर, बट वही चीज जो है ऑफ कोर्स क्वालिटी में फर्क होगा ऑफ कोर्स, लेकिन जब लोगों को एक ब्रांड की चीज डिस्काउंट में मिल रही है तो वो मेरे कहने पर एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट क्यों बाय करेंगे? Okay. So again, it's about spreading the awareness. जो इसका मैं जवाब अभी दे चुकी हूँ कि लोगों को अवेयर करना है कि उस ब्रांड में और इस ब्रांड में क्या फर्क है. मैंने प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि लोग कहेंगे कि मैं अपने बैकयार्ड में एलोवेरा ग्रो होता है, वहां से उठा के क्यों ना लगा लूं. उसका जवाब ये है कि not every aloe that grows into your backyard is free of toxins, is edible or is good for your health. There are more than 300 varieties of aloe vera. अब कौन सा आपने लगाना है, कौन सा यूज करना है, कौन सा बेनिफिशियल है, ये तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी. एंड दैट इज द वन दैट वी यूज इन आवर प्रोडक्ट्स. दूसरा, वो कंपनी के प्रोडक्ट्स शायद ले आएंगे, ये एलोवेरा का प्रोडक्ट ज्यादा सस्ता है लेकिन आपका क्यों महंगा है. यू कैन टेल देम कि इंग्रेडिएंट लिस्ट देख लो, इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में एलोवेरा सिर्फ एंड में आता है विद एलो, राइट. थोड़ा सा एलोवेरा डाल के उसको उन्होंने ग्रेड कर दिया कि दिस इज एन एलोवेरा प्रोडक्ट. जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं हमारे या किसी भी प्रोडक्ट पे, वो उस ऑर्डर से लिखे हुए होते हैं जिस क्वांटिटी में वो उसके अंदर शामिल होते हैं. इन ऑल आवर प्रोडक्ट्स एलोवेरा इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट, एलो बार्बाडेंसिस. दैट मीन्स इन ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स दैट इज द ingredient that is found the most. That is why it is the most expensive. I mean, जो ingredient है that is the most expensive, वो एलोवेरा है, वो हमारे प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा होता है, which makes it concentrated as well. Again, मैं इसकी इतनी डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगी. This is all part of our trainings कि हमने कैसे आपको सिखाना है to do objection handling. इसको कहते हैं हम objection handling, right? So वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आ जाता है. एक आईफोन का नाम नहीं आ रहा, but you've raised your hand. If you can unmute yourself if you have any questions. Or let me see this one. जी, वालेकुम सलाम. Is this Humaira Shah? Yes, I'm Humaira Shah. जी, I Humaira. want to raise a question for me. What's the cost of a one aloe vera gel box? Sorry?
kindly tell me what's the cost of a one aloe vera gel box? Aloe vera gel bottle, it depends on which country you are in, right? हर country में different prices होती हैं. For example, here in Canada it is $20, right? और आप जिस country में हैं उसमें कितनी है? I belong to Pakistan. So we get products from Pakistan, from Saudi, and from Dubai, right? So what we do is we convert the price from Dubai, the prices of Dubai and Saudi into Pakistani rupees, and then we quote the prices to our clients. तो उनकी detail आपको सारी price list वगैरह, brochures वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे from the person that introduced you to the business. आपको हमारा किसने invite किया है presentation में? Ma'am Fozia. Fozia ne. Inshallah, Fozia is going to share the price list with you as well, and उसमें you'll have to convert the price into Pakistani rupees. आपको 30% discount पे मिलेगा obviously, but आगे आप उसको full price पे sell कर सकते हैं ताकि आपको 30% उसका profit मिले, right? मैडम एक ही बॉक्स में सारा प्रोडक्ट्स आ जाएगा फॉरएवर का? अलीना, हमारे प्रोडक्ट रेंज है ओवर 300 प्रोडक्ट्स. जैसे मैंने बताया, बॉक्स के अंदर आपको 20 to 25 ऑफ आवर मोस्ट फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, राइट? तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी पूरी प्रोडक्ट रेंज कैसी है. सारे प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स नहीं होते. वी हैव ओवर 300 प्रोडक्ट्स इन आवर रेंज, सो यू विल गेट द मोस्ट फास्ट मूविंग वंस. Being a member, only 30% benefit is there, or any other benefits we have? Yes, we have a lot. Is this Abid? No, I am. Hello. Hello, Assalamu alaikum. Can I first answer her question? I don't know किसका question था कि there are multiple streams of income actually. एक तो by promoting the products you start with 30% and you go up to 48%. Number two, by introducing people to the opportunity, you get sponsoring bonus for every person that joins your business. जितने लोग आपके business को join करेंगे, there will be duplication in your business, and for every person आपको company एक bonus pay करेगी, sponsoring bonus जिसको कहते हैं, क्योंकि आप company में लोगों को ला रहे हैं. जैसे मैंने बताया था कि बीच में middle tier कोई भी नहीं है, कोई दुकानें नहीं है, कोई TV नहीं है, कोई advertisement boards नहीं है. हमने और लोगों को ढूंढना है जो company का part बनते हैं, business owner बनते हैं, and they also promote the products and they also promote the opportunity and get more people onto the business. और third income जो है वो team leading bonus है, जिसका मैंने बताया था कि when you have an active team and when you are coaching and mentoring a team, जब आप एक टीम बनाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको कोच करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, the company rewards you and gives you team leading bonuses as well based on the performance of your team members. जी आबिद, आप कुछ कह रहे थे? मैडम मैं कह रहा था ये बॉक्स पे कितने आइटम्स होते हैं एक बॉक्स में मैक्सिमम? एक बॉक्स में 20 to 25 हमारे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं. डिपेंड करता है आप किस कंट्री में है. हर कंट्री का बॉक्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. किसी में 20 है, किसी में 22 है, किसी में 18 है. डिपेंड करता है वो कौन सी चीजें हैं जो उस कंट्री में मोस्ट फास्ट मूविंग है, राइट? सो वो जिसने आपको इनवाइट किया है, इंशाल्लाह दे विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ द स्टार्टर किट. उसमें सारा आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और आपकी कंट्री में आपको क्या चीज मिलेगी. 1 minute, let me just go through the chat as well because I haven't seen it. Yes, like Jamila said, all these questions can be answered by the person who introduced you to the business today. Thank you. Wonderful. Please tell me about the order kit. I think Jamila has been going through these messages and she's been answering all the questions. She's my co-leader here. हेलो. Hello. अच्छा मैडम, दूसरा क्वेश्चन है मेरा. दूसरा क्वेश्चन ये कि मार्केटिंग के लिए अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए ब्रोशर्स वगैरह का, उसका क्या प्रोसीजर है? जी, वो भी आपको बिल्कुल मिलेगा आपके बॉक्स के अंदर. इफ इट डिपेंड्स ऑन आपका स्टार्टर किट में क्या क्या है. कुछ कंट्रीज के स्टार्टर किट में हमारे ब्रोशर भी है और प्रोडक्ट बुकलेट भी है. हमारे पास ई बुकलेट्स भी हैं. अगर आपकी कंट्री में वो नहीं होता, आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, आप कंपनी की वेबसाइट से खरीद भी सकते हैं. सो ऑल दीज क्वेश्चंस इंशाल्लाह will be answered by the person who introduced you and who invited you to the presentation today.
I think I don't want to keep everybody waiting now. Yes. Madam, one last question, please. If we do the business, it will be legal, or we will face so many problems from the government side? Because in Saudi Arabia, you know, there are many restrictions nowadays. We shouldn't do, we shouldn't that. So it will be legal for us. Alina, So who last one. invited you? Who invited you to this? I don't know, अलीना ने इसका जवाब नहीं दिया किसने इनको इनवाइट किया है. Anyhow, अलीना माशाल्लाह has lots of question. I would really suggest कि जिन्होंने भी इन्हें इनवाइट किया है वो इनकी सारी क्वेरीज के जवाब दें. और इसका जवाब अलीना ये है कि I started when I was in Saudi Arabia as well, in Riyadh, and पिछले 18 साल से forever living is in the Middle East, including Saudi Arabia. So it is definitely legal, ethical, and halal. Its marketing plan has been approved by the government of Saudi Arabia. तो वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है. मैंने वहाँ पे 3-3.5 साल काम किया. मेरी बहुत बड़ी टीम वहाँ पे है जो कि you know, they're all working with forever. So there is no issue at all. If it wasn't legal, I wouldn't be doing it myself. I wouldn't be promoting it to so many people, right? So I hope I've answered all the questions. Wolf, there's one Wolfie. Yeah. There's a Wolfie Mohammed. I don't know if he's got his hand up. Okay, I unmuted him or her, but she's not saying anything. Anyways, let me try to unmute her again. Ma'am, I want to ask also something. I'm waiting. Yes, Vajiha, please go ahead. So this is a totally commission-based, I think, business. What I get, we don't have like a particular salary. Like at the end of month, how you are going, you are sending the salary, the amount, our account, or like what? Yeah, but it's so because this is not a job, like I said, it is a business. Yes. And this is true for every business. कल को आप जो है अगर कोई कपड़ों का बिजनेस शुरू करती हैं तो आपको हर महीने कोई फिक्स्ड इनकम नहीं आप right? So this is a business. It will really pay you if you work for it, and it will pay you like a business if you treat it like a business. अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी. और किस तरह से आपको पैसे मिलेंगे? It's all an automated system. आपकी जब एक आईडी जनरेट होती है तो उस आईडी वो आईडी सिस्टम में होती है और उस आईडी के थ्रू everything is going on in a point system. यानी उस आईडी के थ्रू जितने प्रोडक्ट्स आप रेफर कर रही होती हैं, लोग आपके प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे होते हैं थ्रू योर आईडी, सिस्टम को पता होता है, वो ऑटोमेटिकली 30% जनरेट करता है उसका. आपकी वो अक्यूमुलेट होती रहती है अमाउंट. अगर आपने किसी को इंट्रोड्यूस कराया बिजनेस में, उसने आपको ज्वाइन किया है, उसका बोनस अक्यूमुलेट हो गया. Every single thing is recorded. You don't have to keep a record for that. The company does that for you, and at the end of the month you get a bonus recap जो कि आप एक देख सकते हैं कि कहाँ से मुझे इनकम आई है और कितनी इनकम आई है. Either you can go to the product center to collect that as cash if you are in the Middle East or anywhere where there are product centers. But if you are in a country where there is no product center, like if you are in Pakistan, so you'll have to give your bank account and it will be transferred directly to that. ठीक है. अच्छा, Wolfie, can you please unmute yourself? Am I on mute? Yeah. Am I still on mute? Walaikum salam. Hello. Hello. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. Oh yeah. Just came to the meeting to get an idea from your experience in the business you're doing. When you first started off. Yeah. Just wanted to know the advertisement side of it, because you said it's understandable you got to invest your time into it. Yeah. But like you would either create videos or you do telecommunication. Is that correct? That's absolutely correct. But what I did was, when I started, I was not on social media at all. Plus, it was the pre-COVID time as well. It was 6 years ago. So I did most of the activities that I was coached. And one of them was doing the product launches. I was more into one-to-one interaction, although I was in Saudi Arabia. But the first ever activity that I did was with my box. I started using the products and I absolutely loved them. And then I invited a few of my neighbors over and I told them, I knew 3 of them through my friend. And in fact, I knew one of them who was a doctor who lived right next to me, and she brought 2 more ladies with her, right? So in my first product launch is like you're introducing the business to people by inviting them to your house and giving a presentation about the products. So that's what I did.
all three ladies took some products from me. They purchased it from my box because I did not open every single product. I just opened a few to get an idea about them. And then I did a product launch. They came over, they bought the products from me, and then they just spread the word around by word of mouth, right? They liked the product so much, and that's how I started. If you're talking about how I started, that was my first activity. Then I did several stalls and exhibitions as well. After that, slowly and gradually, when I realized that the true potential of work from home would be to get active on social media, I started doing that as well. So now that is more common, especially after the COVID, right? Here in Canada, also pre-COVID, I did lots of stalls and exhibitions. Over here, we have lots of Eid bazaars, Ramadan bazaars, and Christmas stuff, and lots of activities going on. So I always used to participate in that to get new clients, to get exposure to new market. So I used to take my products there and introduce them to different people. But now we are more into online social media stuff, and we do. You don't need to be a pro at that. You don't need to really create professional videos, but you can start slowly and gradually and get better and better with each platform by learning and implementing. When you said you did exhibitions and stalls, was that self-funded, or did the business help you in that? No. I became part of an exhibition. I mean, I had a table over there where the products were mine, but the marketing material I borrowed from the product centers. They would give you the brochures, they would give you the back banners and everything. But again, it depends on which country you are in. Here in Canada, they do give it, somewhere they don't. So it really depends on where you are. And if you talk to the head office, they will definitely help you, but they're not going to give you the products to display on the table. Those have to be yours. And I don't ever take too much with me, just the ones that I already have. So it's okay to have a few and then just introduce them to the public, give out your cards and make new clients, make new contacts. You don't have to sell so much, but you need to tell people that you are the aloe person, the go-to person if they need the aloe product. So that is basically the intention behind me going and doing the stalls and exhibition rather than making a lot of sales. I don't invest too much into the products. Hope I've answered your question. That's great. Thank you. You're welcome. In Saudi Arabia, we experiment on public places like exhibitions, etc. Humaira, that is specific to your country. Inshallah, we can talk about that. There is always a way to do things. Like I said, I've done business in Saudi Arabia for 3.5 years, and I became a manager over there. And I moved to Canada on the basis of my income in Saudi Arabia. So there are a lot of ways in which you can do it. Yeah, like Jamila said, that you can use other retail methods as well, right? So if you don't have any other questions, I'll take my leave, inshallah, and I hope to see lots and lots of you as being part of the Soaring Eagles. Now, inshallah, please get back to the person who invited you to the presentation today. We would love to have that initial meeting with you, get you started, and have you as part of the Soaring Eagles.